particularly of the phospholipid glycerophospholipids, including that glycerophospholipids contain only amines. Question is, that is the phosphatidylethylamine and phosphatidylserine. It has to catalyze the movement from outer leaflet to inner leaflet, or whenever the serine, phosphatidylserine that is present in the inner leaflet, when it moves toward the outer leaflet, particularly in case of the during the apoptosis. Second is a floppage that catalyzes the from the proteins, lipids from inner leaflet to outer leaflet. Whereas scramblage that catalyzes the horizontal movement, a translocation of the lipids. Other protein enzymes that has present in permeate. Question is permeate. It is known as enzyme, but however, it has to catalyze the transport of the molecules. In E. coli, that is the lactose. Lactose has to transport, that is beta, simply has to be known as beta galactoside permeate, that catalyzes the transport of the lactose from extracellular environment to intracellular environment, that is coupled also with the protons. So that sometimes it is confused, like as a permeate is the enzyme, but actually it is a transporter. Other has an enzyme that is present in the plasma membrane, that is known as adenylate cyclase, guanylate cyclase, kinase. These are the three enzymes are involved in signal transduction, etc. Now also we have to come to one question is one important question, GPI anchor. दूसरा राफ्ट, तीसरा कैवियोलिन. Raft and Caviolin, and 3 GPI. Question has come. GPI simply it is known as glycerophosphatidyl inositol, to which cholesterol molecules remain attached in the plasma membrane. There is a raft. The raft is basically it is the assembly of sphingosine, sphingolipids, and also cholesterol that also make a cavity. Later one, this also cavity that is also known as caveolin, which is involved in the transport, intracellular transport from the external environment to internal environment, the internal cellular environment. This also caveolin also that consists of the proteins, particularly also it holds the beta pleated structure of the proteins. The question has come from also these three points. Students, please also note to about also these three terminology, caveolin, and as another associated also with FRAP. Second is atomic FRAP, that is the fluorinated atomic P stands for phosphorylation size. The FRAP, it is a technique that is utilized also for the detections of the movement of the proteins. Atomic force microscope. Atomic force microscope that is also used to detect the movement of the proteins or lipids in the plasma membrane. These are the two techniques. So that also one question has come during decade of 2010 from FRAP and AFM, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी. यहां से आप देखेंगे इसके ये सारे इसमें जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है. नाउ वी हैव टू कम फिजियोलॉजी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
That's why as a plasma membrane is metabolically active, that maintain ionic gradient inside the cell and adjust with the external environment. Secondly, it received as a source of food, your food from external sources to internal sources. It also release some as a products that is being synthesized inside the cell, particularly secretory cells, like as endocrine gland cells and other cells that has to produce substances within the cells, but however they don't utilize for itself, they release also directly into the external environment through which also from which also it travels along with the blood in case of multicellular organism like human beings to have a distant organs. So that is a plasma membrane has to maintain very first ionic environment. Ionic environment, if in due course of evolutions, it is known as life has evolved in the aqueous environment, particularly in oceans. An ocean that contains large quantity of the sodium and other has some minerals. One question always is asked why sodium is present to the extracellular environment rather than intracellular environment. Because as it maintains that due to cell has to maintain the osmotic concentration. In spite as they also contain the potassium ion within in its cytoplasm, but sodium always tend to remain present outside the plasma membrane. That's why also the sodium is known for the cell to maintain the extracellular environment, and potassium is known for the cell to maintain the intracellular environment. उससे अब फिजियोलॉजी शुरू करने के पहले एक छोटा सा यहाँ पर है कि कितने प्रकार के मेम्ब्रेन्स होते हैं फिजियोलॉजिकली ऐसे मेम्ब्रेन्स impermeable, permeable, semi-permeable, selectively permeable, differentially permeable. Impermeable, that neither allow the solute nor solvent across the cell. For example, as a cell, epithelial cells of the skins, that is impermeable. That is, do not allow neither solute and also solvent, but however permeable. This is that membrane so that allow both solute as well as solvent. But in case of the semi-permeable membrane, it allows the movement of the solvent, not the solute. These two terms that depends upon the concentration gradient has across the cell. Selectively as permeable or differentially permeable. Selectively permeable is so that cell needs particular ions like as calcium, magnesium, etc. Differentially permeable membrane again it is similar to the selectively permeable, but however it depends upon the electrochemical gradients. That is the electrical has a charge across the plasma membrane. Along with the electrical gradient, 2 points also. One is polarized, दूसरा hyperpolarized and depolarized. The very first, whenever cell is in rest, means it is not functioning actively. It is in rest. That there is cell has remains in polarized conditions. Polarized condition means the electrical charge of the plasma membrane outside, inside, it has nearly has about minus 70 millivolt, minus 70 to minus 75 millivolts. Some books have written minus 65 to 75 millivolts, average is minus 70 millivolts. So that as the plasma membrane, the cell is in rest, that always has to maintain its electrical charges just nearly about the minus 70 millivolt.
whenever influx of the cations, it reverses the electrical charge inside the SO cell, so it undergoes depolarized. Particularly, I will discuss in as neuronal transport, polarization and depolarization. Hyperpolarized. Hyperpolarized means plasma membrane is being more negative. And more negative means minus 90 millivolt. This condition has been associated in the people who is suffering from a kind of disease like as known as depressions and dementia. जितने भी पीपल होंगे डिप्रेशन में, उनको कुछ भी कहते हैं ना कि आप बी पॉजिटिव डिप्रेशन पीपल्स को, बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रिकल चार्ज nearly about minus 90 volt, or as electrical charge मतलब negative ions that enters that causes that brings negative charges inside the SO cell. As a result, as the membrane electrical charge, electrical potential that goes up to minus 90 millivolts or more. यह क्या हो जाता है डिप्रेशन में, और पर्टिकुलर जैसे जैसे जितना इंक्रीज होगा, if it increases in case of the heart या people who is suffering from heart attack and us, so they also have membranes. If a heart has cardiac membrane is depolarized, it means they are active. But however, in that hyperpolarized conditions, it has created, brings the harmful effect on that people's. बेटा कपड़ा था बाबू, कपड़ा दे दो इसको बंद कर। We have defined the functions of physiology of the plasma membrane in two categories. One is downhill movement. Second is the uphill movement. Downhill movement means the movement has across the plasma membrane that occurs along with the concentration gradient, along with concentration. Whereas uphill movement that has occurs across this plasma membrane against concentration. और यहाँ पर शब्द है against. Simply means against means there is a barrier that do not allow the movement of the substances directly. However, they enter through some carrier proteins or some channel proteins or pump proteins and etc. So that against विरोध नहीं है, opposite नहीं है. Against simply means कि membrane is acting as a barrier for the movement of that kind of the substances. But in case of downhill movement, that along with the concentration as a gradient, simply you can say that is the higher concentration to lower concentrations. So one is has a concentration that depends upon the two objects. One is solute, second one is the solvent. Whenever solute concentration increases, solute may be both organic solute as well as inorganic solutes. If solute concentration increases inside the cell, then it reduces the concentration of solvent. Then it is known as higher concentrations. Just its reverse, solute concentration decreases and concentration of solvent increases, then it is known as lower concentrations. Lower concentration have chances for its saturation. It means it allows the movement. Yeah, they can accumulate more solute. Whereas in higher concentration, they allow the movement of the solvent, particularly water, etc. Downhill movement may very first movement, that is the diffusion. अब यहाँ पर डिफ्यूजन जो है, इसमें अगर स्पेलिंग आप याद कर लेता स्टूडेंट्स, तो आपका डिफिनेशन याद हो जाए. If you look at DIFF means differences, or this
that is the fusion, means mixing. Because diffusion always eliminate the concentrations differences and always it brings equilibrium. And diffusion का definition क्या है? So basically it is a spontaneous movement. A spontaneous movement that occurs along the isocell membrane across the isocell from the region of higher concentration to lower concentrations with the expenditures of energy, and it always also eliminates the concentration gradient so that it brings equilibrium. And so this as a diffusion, it is of so many kinds: active diffusion, passive diffusion, etc. Mainly, so there is two kinds of active diffusion and passive diffusion. But one question is again कि diffusion जो है पोलर का होगा या नॉन पोलर का होगा या पोलर का होगा. So that is so diffusion, so that moves along the concentration gradient from the regions of higher concentration to lower concentration, eliminating the equilibrium. In case of the non-polar, the membrane is not acting as much barrier, so that the substances that diffuse readily through the plasma membrane, like oxygen, nitrogen, etc., some kinds of the foods like sugar and others, it diffuses. And also the energy. Cell utilizes two kinds of energy. One kind, that is the energy that is created, that develops due to accumulations of the substances across this membrane, across the extracellular environment or to the intracellular environment. Simply it is called as potential energy. Because any kind of movement does not happen unless and until energy is not expenditures. But as the cell utilizes two kinds of energy. One kind, that is the accumulation of substances that create the potential energy and that allows their movements across the differences. That is the potential energy, and that potential energy get converted into kinetic energy that allows the substances to move. But another kind is that is the metabolic energy, that is the ATP. So that is ATP coupled as a processes you will see later. The non-polar substances, what is the movement or how much energy is expenditure, or how you can calculate. For example, this is the cell and the concentration gradient as inside the cell is as 10 or outside, for example, as 100. That's why there is 10 times differences inside the cell and outside the cells. How we can calculate the energy? The energy is that is the delta G is equal to RT natural log upon Ci upon C0. Now we also put that RT, then 2.303 into 1.987 into 300. जनरली लेते हैं 273 है और 25 लेते हैं, 300 अप्रॉक्स ले लेते हैं. लॉग CI होगा 10, लॉग है 100. तो देन इतना पर करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर 1.4 किलो कैलोरी के आसपास आता है. आप कर लेंगे 2.3 इंटू 2 4.6 और यहां से 3 करते हैं, 6 3 18 1 4 के 12 13. ठीक है, तो 1.4 3 को हम 4 में ले लेते हैं, 1.4 बाकी रेस्ट आता है. 1000 से डिवाइड करने के बाद हमें किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं. लॉग 10 का वैल्यू होता है आपका 1 और लॉग 10 का वैल्यू होता है 2. सो दैट यहाँ पर 1.4 किलो कैलोरी इंटू -1 बराबर -1.4 किलो कैलोरी पर है. Then concentration increases 100 to 1000, you can multiply or 100 at 10 times. So whenever concentration has a gradient across the cell, that differs either 10 times, 100 times, 1000 times, then the energy cell expenditure, the energy that varies from
या इट्स मल्टीप्लाई है ना, इट्स मल्टीप्लाई 1.4 into 2 3 4 एक्सेट्रा डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आता है इसमें, खास करके जब इंटेस्टाइन में आप पढ़ेंगे शुगर का ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट या सोडियम के साथ जो होता है आपका, दैट इज द सिम्पोर्ट, जहां पर कपल्ड है आपका बहुत से जो प्रोसेसेस है ट्रांसपोर्ट है सेल का, दैट इज कपल्ड है विद सम काइंड्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस। जैसे आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर होना है, क्लोराइड शिफ्ट चलती है, द नंबर्स ऑफ द एसो मूवमेंट अक्रॉस द एसो सेल दैट इज कपल्ड एसो विद अदर्स। अब यहां से अगर है सब पोलर सब्सटेंसेस आएगा, तो पोलर सब्सटेंसेस यहां तक सही है, फिर आपका आ जाएगा जे फैराडे, और यहां पर ई लिख दे चाहे वी ऐसे लिख दे, वोल्ट। फैराडे जिसका वैल्यू आपका 23.9067 बने कैलोरी में, यहां पर जो वोल्ट सेल का जो वोल्ट है, और ये कंसंट्रेशन है सॉल्यूट्स का। तो ये पोलर के लिए आएगा, पोलर का कैलकुलेशन आप इस तरह से इस फॉर्मूले पर करेंगे, नॉन पोलर का फॉर्मूला हटा देंगे, तो यहां से हटा करके आप कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, डिफ्यूजन किसका हो रहा है, पोलर का है कि नॉन पोलर का है। सो द डिफ्यूजन इज नॉट हैज depends upon the substances that may be either polar molecules or non-polar as molecules. Second है major question, that is the osmosis. टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन पढ़ाएंगे, अभी आगे चल रहे हैं, पहले थोड़ा सा डाउन कंसंट्रेशन सब कुछ मीनिंग बता रहे हैं आपको। ऑस्मोसिस, द ऑस्मोसिस सिंपली यहां पर कहा जाता है कि ऑस्मोसिस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, बट एक्चुअली जहां पर एनर्जी को डिफाइन नहीं किया जाता है, बेसिकली ऑस्मोसिस the processes also by which the solvent also moves from higher potential energy to the lower potential energy. Basic meaning, not from lower concentration to higher concentration or higher concentration to lower. Basically, it's osmosis that occurs across the cell, and that also depends upon the concentrations of the solvent. Whenever a solute has a concentration is less, it means concentration of solvent increases. That's why also the processes by which also the movement of solvent also takes place from the higher potential energy to the lower potential energy. That is also this osmosis that occurs through the membrane, particular kind of the membrane that is known as semi-permeable membrane. So that osmosis, it is the process that occurs across the semi-permeable membrane in which the solvent moves from the higher potential energy to the lower potential energy. And it is of so many kinds, basically so 3 kinds, and depends upon concentration. It moves inward, then it is known as endoosmosis. It moves outward, then it is known as exoosmosis. Or 2 or 3 terms that it is related with the osmosis, that is hypertonic, isosmotic, or hypotonic. Hypertonic or isotonic. So that concentration is hypertonic means solute concentration is more, hypotonic solvent concentration is more, or isotonic that is at equilibrium. Or that osmosis maximum that occurs in plant cells. In case of the animal cell, intestine cells or kidney cells, or third one is that the RBC, particularly in case of diabetic patient. Diabetic patient has where glucose molecules that floats in high concentration in blood plasma, and the RBC is permeable for the glucose, and that glucose enters inside the RBC cells. As a result, solute concentration increases, and that solute concentration increases particularly consisting of the sugar, and it needs for its dilutions, that is water.
So that the diabetic patient has three characteristics: polyphagia, polydysplasia, or polyuria. So that they consume more as water for its dilutions. Sometimes glucose enters in as RBC, or more water enters, then it creates the hydrostatic pressure on the membrane. Sometimes as a membrane get ruptured. That's why as the diabetic people have such problems. Kidney, nephron cells that also regulate the iron concentration inside the body and also allow the nephron cell to absorb and reabsorb the water to maintain the blood plasma and the blood plasma volume of the cell through the process of osmosis. चलिए अब यहाँ पर डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया. अब चलता है टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन. Simply one kind is simple diffusion. Simple diffusion. Simple diffusion that is similar to just we have defined the movement of substances from the higher concentration to lower concentration with expenditure of energy and eliminating the equilibrium. That is also simple diffusion. But the basic question in case of the facilitated diffusion. Facilitated diffusion. And this facilitated diffusion is very complex process that occurs in the cells. It occurs in the body. It is also carried out by proteins. Without a protein, the substance does not have some moves. And it's common example and best suitable example that is the movement of the glucose in the different kind of the body cells. In different kind of body cells, in case of the human beings and other, there is 12 kinds of the glucose transporter present in different body organs. 12 kinds. In which very first that is known as glucose GLUT. It is numbered as abbreviated as GLUT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This has a GLUT has a 1. That is ubiquitous, versatile as a transporter that is as a present in different all the body cells. GLUT2 has that is present in the brain, liver, heart, etc. Main the question that is the GLUT4. GLUT4. This GLUT4 दो बार क्वेश्चन आ चुका है इस पर GLUT4 पर because GLUT4 क्योंकि you know diabetes is of two kinds. एक metabolic disorder है और दूसरा hereditary है. So that has a hereditary means it is an autosomal recessive disorder, and if as both parents are heterozygous in conditions or homozygous conditions, then they transmit the defective genes that is unable to produce the GLUT4 transporter in the muscle cells, intestinal cells, and adipose cells. But as the muscle cell, skeletal muscle cells, that is severely affected as with GLUT4 because this GLUT4 that is the insulin sensitive. इसको डायबिटीज टाइप 1 कहते हैं, डायबिटीज टाइप 2 कहते हैं. और सेकंड चीज है तो इंसुलिन इंडिपेंडेंट. इंसुलिन है बॉडी में, उसके बॉडी में बन रहा है, फिर भी ऐसे उसको शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है. तो बिकॉज ऐसे इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द GLUT4. और GLUT4 है सो दैट इज द बिकॉज ऐसे GLUT2 this is GLUT2 that is present in the intestine as a liver, or most as important it is also present in the islets of pancreas cells, beta cells. Or pancreas beta cells is known as sensor as a cell that senses the concentration of glucose in the blood, and accordingly it adjusts the amount of insulin. यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका GLUT that receptor that is much sensitive for the glucose or is present in the islets of beta cells of pancreas. और यहाँ पर वो क्या हो जाता है, सेंसर की तरह काम करता है. सेंसेज जैसे होता मैंने ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन एंड अकॉर्डिंगली हैज इट प्रोड्यूसेड या रिलीज इंसुलिन हार्मोन. क्योंकि इंसुलिन सबसे खतरनाक हार्मोन है, अगर ज्यादा रिलीज होगा
तो देन ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, फिर पीपल्स अनकॉन्शियसनेस में और कोमा में अगर ग्लूकोज उनको सप्लाई नहीं होती। तो this GLUT4 that is present in the beta cells of pancreas that adjust and senses the glucose concentration in blood plasma. Later one, it has to release the insulin. That insulin has to travel along with the blood. और यहाँ पर क्या होगा कि जो मसल सेल्स है, skeletal muscle cells, this has to contain, for example, this is the glucose molecule, or also this is GLUT4 that is present inside the cell in vesicles. This vesicle is derived from the Golgi body. So that is insulin this insulin binds to its receptor present on the plasma membrane and sensitizes the cell, particularly this glucose transporter T4 that is present inside the cell in a vesicle forms. This vesicle that moves, moves toward the plasma membrane. Whereas glucose as a molecule that it has to present, it has to binds and as a later one it return inside the cell. So that as this in case of the muscle cells, glucose is transported as a from as a blood to inside the cell for further oxidations like glycolysis, Krebs cycle and etc. चाहे आपका आदर्श हो गए, यहाँ पर the liver cells, आपका muscle cells, heart cells, they have such kind of the transporter. Or if also parents are heterozygous as the individuals that have received the defective genes, then whenever the glucose as a GLUT4 transporter is defective, then there is reductions in the glucose transport from the blood plasma to inside the cell. As a result, as a glucose concentration always remain higher in the blood, and simultaneously the insulin has to is released. इंसुलिन रिलीज हो रहा है लेकिन ग्लूकोज है आपका कंज्यूम स्केलेटल मसल्स में नहीं होता है। क्वेश्चन आ चुका है जिससे आपका डायबिटीज टाइप 2 जो कहते हैं, जो हेरिडिटरी है, वो आपका यहाँ पर इस प्रोटीन के डिफेक्ट होने के कारण है, ना कि आपका इंसुलिन की कमी के कारण। सिंथेटिक एंड अदर्स यहाँ पर ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन आपका उसका कॉमन एग्जांपल दैट इज insulin है, GLUT4 glucose transported in the skeletal muscle cells or muscle cells. तीसरा पैसिव डिफ्यूजन। अब यहां पर देखिए पैसिव, स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे देयर इज एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का क्या अर्थ है, पैसिव का क्या अर्थ है? तो सिंपली ऐसे एक शब्द की जैसे आपको भूख लगी हुई है तो दूसरे का बना हुआ खाना खा लिए, तो दैट इज द पैसिव। और एक्टिव यही होगा कि आपको भूख लगी और खाने की जरूरत है, और जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक आपको खाना नहीं मिलेगा। तो सेल को अपने खुद काम करना पड़ रहा है, प्रोड्यूस करना पड़ा, एनर्जी खर्च करनी पड़े, सारा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो वहां पर मेनली उसको हम एक्टिव कहते हैं। और पैसिव है तो केवल ऑलरेडी है दे आर अवेलेबल एंड दे मूव। But this kind of passive has to transport across the plasma membrane. It has to carried out by a carrier has proteins. And I am giving two examples. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा अभी ऐसा हम बताए आपको लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ द इकोलाई, इन केस ऑफ द इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन अदर, जहां पर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है। तो यहां पर जो परमिएज अभी जो हम बताया कि आपका जो परमिएज या लैक्टोज ट्रांसपोर्टर इन केस ऑफ दी, हालांकि यह को ट्रांसपोर्ट है आपका कि यह जो परमिएज है जो लैक्टोज ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ द इकोलाई दैट कंसिस्ट ऑफ 417 अमीनो एसिड्स और इट इज द सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, whereas this has to transport of the lactose in E. coli membrane that is a coupled has with proton has to transport. Proton transport. So that is a proton and as a lactose move together from outer environment to internal environment. So that it is also called as co-transport. Sometimes इसको कहते हैं, मैंने सिंपोर्ट भी नहीं कहेंगे, को ट्रांसपोर्ट कहते हैं इसको, क्योंकि साथ साथ मूवमेंट हो रहा है आउटसाइड टू इनसाइड।
सेकंड है तो आपका इंटेस्टाइन में बता दें कि जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इंटेस्टाइन में जो हो रहा है, अगेन कैरियर हैज प्रोटीन, बट हाउएवर इट डज नॉट हैव टू नीड द इंसुलिन, सो दैट हैज the transport of the glucose inside in intestinal cell, stomach cells etc, जहां पर आपका क्या होता है, पैसिव है सो ट्रांसपोर्ट है होती है, जहां देयर ओनली है इट नीड्स दैट प्रोटीन, that has a protein that is the membrane, integral membrane protein that is present in the plasma membrane. It receives the glucose and then after binding has with the glucose, it has to carry it from that environment, external environment to internal environment. So that so the efflux of the glucose when carrier protein to outside, and whenever glucose has to bind, they has to cause it inverted inside the cytosolic sites. Later it leaves the glucose and again has ready for next movement of the glucose from outer environment to internal inside environment, cellular intracellular environment. तो यहाँ पर आपका दो है सो आपका है पैसिव है सो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो आपकी हो गया पैसिव हो गया। अब है सो सेकंड जो आपका बल्क ट्रांसपोर्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको ऑलरेडी है उसमें ज्यादा नहीं जा रहे हैं, दैट इज द फाइगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, इमियोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस, that is in which also the lysosome is involved and it makes it form the phagolysosome, and it is the basic processes for feeding processes in case of the protozoans. And also the lysosome is known as a first stomach that has evolved in due course of evolution in eukaryotic cells in case of the protozoans, where it acts as a both helps the import of the food by making vesicles, that is phagolysosome, and later one its medium is acidic, so that helps for digestions of as a protein and other as a substances. In case of the WBC or generally so आपका lymphocytic cells या so leukocytes that has act as a defensive as a cell, defense as a cell, whereas the concentration of lysosome is higher, that helps the RBC to capture, sorry, WBC to capture or engulf the pathogenic substances or pathogenic molecules that damages the cell, and also finally they neutralize and etc. ठीक है, तो वहां पर है आपका phagocytosis or pinocytosis. It can simply as it means the movement of substances in liquid component of the through the cells. Immunocytosis simply it is known as cell vomiting, simply exocytosis. Exocytosis को ही क्या जाता है, मान immunocytosis और ऐसा cell vomiting, मान excess substances. In case of the protozoan, again you know that is the contractile has of vacuole, so that is it receives the waste material, and however in freshwater protozoans where concentration contractile vacuole numbers increases because depends upon the concentration of ions. As the solute concentration increases in protozoans, and however also the outer environment of the water, that is the hypotonic, inside environment that is the hypertonic, so that excess water has to remove from the cells, and so that also the water is first of all captured by the contractile vacuole and then it fuses with the membrane, then it ruptures finally, so that the contractile vacuole is known for osmoregulations. तो यहाँ पर बाहर निकालता है कई ऐसे सेल में, जैसे जिसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस और इम्यूसाइटोसिस और सेल वोमिटिंग सम प्रोसेस occurs. अब मेनली जो हमारे हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट, अब यहां से देखिए अपहिल, अब अपहिल सिंपली मीन्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट इट मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पर कैसा करा, बैरियर की तरह काम कर, जो आने नहीं दे रहा है या जाने नहीं दे रहा। यहां पर जो अपहिल है सो ट्रांसपोर्ट, दैट अपहिल है सो ट्रांसपोर्ट, जिसमें सिंपली सबले हम जानते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कभी कभी दो में बांट दिया जाता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे फिर आप पढ़ेंगे, इसमें चैनल पढ़ेंगे, पंप पढ़ेंगे, कैरियर पढ़ेंगे,
सब है ना यहाँ पर आएगा। ट्रांसपोर्टर जिसको जो ट्रांसपोर्टर है, कैरियर है, पंप है, चैनल है। This active as a transport in which, yeah, it is only involves the movement of ions. Ions may be sodium ion, potassium ion, calcium ion, proton ion, etc. कुछ भी है सो। और एक सेल के अंदर कंसंट्रेशन अगर हम देखते हैं तो बेसिकली ऐसो सोडियम इज हायर आउटसाइड द ऐसो सेल and potassium is always higher. For example, कि आपके यहाँ पर सोडियम 110 है तो यहाँ पर 10 मोल्स में, पोटासियम यहाँ 10 है तो यहाँ पर 140 है, 120, 110, 120 के आसपास 140 है। उस से कैल्शियम हाई, लेकिन कैल्शियम सेल के अंदर बहुत कम होता है और कैल्शियम वेसिकल के साथ बाइंड है, क्योंकि जो कैल्शियम है यहाँ पर क्या हो जाता है, इट हैज मच एफिनिटी विद द phosphate and cell has higher concentration of the phosphorylated molecules like as of the intermediates of the glycolysis and all energy rich compound as of that has phosphate groups. Whenever concentration of the calcium increases inside the SO cell, then it binds with the calcium and it causes precipitations, मतलब damages the cell, cell को damage कर सकता है। इसलिए कैल्शियम वहां पर नगण्य माने माइक्रो नैनो मोल्स में पाया जाता है और कम सबसे कम पाया जाता है। उसमें से मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीज और मैग्नीशियम इट इज रिक्वायर्ड एज फॉर द कैटालिटिक प्रोसेसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस ऑफ द ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस एक्सेट्रा। जितने भी काइनेज एंजाइम है उसको मैग्नीज या मैग्नीशियम है चाहिए। जितने भी काइनेज एंजाइम है, चाहे वो आपका हेक्सोकाइनेज है, चाहे ग्लूकोकाइनेज है, चाहे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है एंड अदर काइनेजेस दैट आल्सो नीड्स आल्सो द मैग्नीज और मैग्नीशियम। क्लोराइड भी ऐसा आपका है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, जो ऑर्गेनिक एसिड इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड अदर्स दैट कंटेन द ऑर्गेनिक एसिड्स। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, देखिए यहां पर पोटासियम का कंसंट्रेशन 110, 120, 130 डिफरेंट सेल्स में कहीं कहीं पर डिफरेंस मिलता है, लेकिन फिर भी ऐसे सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि potassium is present in higher concentration in comparison to sodium because sodium is present outside the cell 110 moles, but calcium यहाँ potassium यहाँ पर जाता है, फिर भी ऐसे पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी यहाँ पर आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर बेसिकली कि जो पोटासियम है ना, इसमें मोर देन 50 और 45 और 50% पोटासियम आयंस that is coupled also with the proteins and other also molecules, so that also not necessarily it exists independently in such higher concentration that is given here. Other also molecules, that is the chloride ion and organic acids, that is the intermediates and few negatively charged amino acids like aspartate and glutamate that bear the negative charge. Or third one, that is the phosphate और बाइकार्बोनेट। फॉस्फेट जितने भी एनर्जी रिच कंपाउंड, ऑल द एनर्जी रिच कंपाउंड, फॉर एग्जांपल अगर आप एटीपी को देख रहे हैं तो -4 नेगेटिव चार्ज, एडीपी है तो देखेंगे तो आपका -3 है, सॉरी एएमपी भी अगर है तो -2 है। तो सो दैट so this is negative charges that make the SO cell inside negative. Whenever influx of the SO positively charged cations that takes place, then it undergoes रिवर्सेस द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डीपोलराइज्ड। इसलिए मिसाइल अगर रेस्ट में है तो इनसाइड नेगेटिव जो आपका है, जिसके कारण -70 मिली वोल्ट बताया आपको जो एवरेज आता है, तो यहां पर दिस इज द पोलराइज्ड कंडीशंस और दिस आल्सो पोलराइज्ड कंडीशंस ऑफ द सेल that has undergoes two more changes. One, that is the depolarized whenever during the active activity or vigorous activity, एग्जांपल दे रहे हैं आपका। और सेकंड है आपका डिप्रेशन के केस में, जहां पर यह जो मिली वोल्ट है -70 टू -90 में चला जाता है। सो द इनफ्लक्स ऑफ द मोर एंड मोर है नेगेटिवली चार्ज आयंस, यस द सेल होल्ड्स मोर एंड मोर नेगेटिवली कंपाउंड्स लाइक एज क्लोराइड आयन, चाहे ऑर्गेनिक एसिड एंड अदर्स है, वहां पर लिया जाता है। होने कारण इस पर it undergoes the hyperpolarization, during which also the membrane potential changes increases from -70 millivolt to -90 millivolts। ठीक है, अब इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट का
उसके पहले इसमें एक है सो आपका, पहले बता दें चैनल थोड़ा सा इसमें। सेल हैज टू काइंड्स ऑफ चैनल, कैटायन चैनल और एनायन चैनल। कैटायन चैनल दैट इज द सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, और जहां तक प्रोटॉन की बात है तो उसको पंप में रखा जाता है, प्रोटॉन पंप। जनरली है सो यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, एटीपी खर्च हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार के मूवमेंट में एटीपी है सो खर्च होगा। जो पहले बताया कि एक्युमुलेशन ऑफ सब्सटेंस है जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही है, उसके कारण मूवमेंट है सो। जिसमें छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं सोडियम और पोटेशियम का। अब सोडियम और पोटेशियम का यहां पर देख रहे हैं कि आपका सोडियम है सो सेल के बाहर है, और हाउ इट एंटर्स, कैसे एंटर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ही दे रहा हूं, न्यूरॉन है, इसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, यहां पर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, दोनों के बीच में आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। और कोई भी व्यक्ति जैसे निकोटीन लेते हैं, स्मोकिंग ले करते हैं, कैफीन ले लिए, ठीक है, तो सिंपली है कि यहां पर क्या है, निकोटीन एसिटाइल कोलिन जो चैनल है उसका एग्जांपल दे रहे हैं आपको। तो व्हेनेवर एज पीपल्स हु कंज्यूम निकोटीन या स्मोकिंग के थ्रू ले लें, चाहे आपका जो वेबर गेजेज है जो उसके साथ ऐसो पी लें, या अदर इनडायरेक्टली और पैसिवली, क्योंकि हम लोग ना भी ऐसो स्मोक कर रहे हैं तब भी ऐसे इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में उसके आ रहे हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर ऐसे देखिए कि जैसे ही ऐसो आपका निकोटीन आ रहा है, then it binds to presynaptic membrane, and as whenever as a nicotine binds to the presynaptic as a membrane, then it allows us the influx of the calcium ion, or calcium ion so that moves as in the presynaptic, not in postsynaptic, only as it moves in presynaptic membrane. And this as a calcium, जैसे it has positive charge, और यहाँ पर वेसाइकिल है जो आपका है दैट हैज कंटेन द एसिटाइलकोलिन, acetylcholine one that is known as neurotransmitters. This acetylcholine in a rest condition means nicotine नहीं है और other stimulator नहीं है, activator नहीं है, it is present there. But whenever any stimulator or activator comes, either nicotine or other molecules, then a small amount of the calcium molecules which influx takes place in presynaptic membrane. और यहाँ पर कैल्शियम का क्या है, कैल्शियम यहाँ पर दो तरीके से इससे बाइंड करते हैं। एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है जिसको कालमोडलिन कहते हैं, कालमोडलिन। ये देखिए कि यहाँ पर कालमोलिन पर देखो दो क्वेश्चन आता है। एक कालमोलिन क्या है कि एसिडिक प्रोटीन है, एसिडिक प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन मींस पीएच डिक्रीज हो गया, नहीं वो नहीं करना आपको। ये एसिडिक प्रोटीन जहां पर आपका एस्पार्टेट और ग्लूटामेट ज्यादा है, that has to bear the negative charge, and that has a negative charge so that couples the calcium, so that is calmolin the calcium binding protein और calcium also transporter protein है जो आपका एसिडिक ऐसा प्रोटीन है जो कैल्शियम। और एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक कालमोलिन कितने कैल्शियम को बाइंड करता है, तो वहां पर जो आंसर आएगा कि एक कालमोलिन मॉलिक्यूल 4 कैल्शियम मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। वन कालमोलिन है ना, दैट ऐसा बाइंड्स 4 कैल्शियम मॉलिक्यूल्स। And so what is the role of the calcium? तो यहाँ पर देखिए कि जो सिनेप्टिक वेसिकल है जो गोल्गी बॉडी से आपका डिराइव हो रहा है, और गोल्गी बॉडी के मेम्ब्रेन कंपोजिशन देखें और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है तो देखें तो समवॉट है सो सिमिलर, पूरा सिमिलर नहीं है लेकिन है सो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और है सो आपका प्लाज्मा से कंपेयर करेंगे तो आपका गोल्गी जो बॉडी है दैट इंटरमीडिएट्स इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, so that as its lipid composition and protein composition
that is somewhat, yeah, so good 80%, 85% similar. That's why this as a vesicle, in absence of calcium molecule, does not fuses with the presynaptic membrane ends. So that is a calcium, it has that here the positive charge, or this positive charge, one charge has that bond with the calcium and acetylcholine vesicles, and another has a one that is the presynaptic has a membrane, and it has a college, it has to allow the has acetylcholine vesicles to diffuse through the presynaptic as a membrane, and later as acetylcholine release in presynaptic as a cleft. और जैसे ही acetylcholine, its receptor that is present on the postsynaptic membrane. So that is there is also two receptors. One has a nicotine receptor that is present on the presynaptic neuron, or as a result, as acetylcholine is released into presynaptic cleft, then its receptor is present on the postsynaptic membrane. और जैसे ही acetylcholine आता है तो यहाँ से 1 मिलीसेकंड मैंने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में nearly about 10 to the power 6 sodium ion diffuses. 10 to the power 6 मीन 10 लाख ऐसे सोडियम आयन डिफ्यूज किसी में 10 पावर 7 दे देगा, उससे नहीं अलग कोई बात है. तो 10 to the power 6 ऐसे आपका सोडियम आयन diffuses. That's why sodium ion has comes inside. जैसे ही कम आ गया, यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मेम्ब्रेन गेट डीपोलराइज. पहले क्या था, पोलराइज कंडीशन था, आपने निकोटीन हम लोग कहीं से आ गया, जैसे आते हैं एसिटाइलकोलिन है, सो आपका रिलीज हुआ. जैसे रिलीज होने के बाद मेम्ब्रेन अंडरगोज जैसे डीपोलराइज, और ही डीपोलराइज जिसको आप कहते हैं एक्शन पोटेंशियल कहते हैं. डीपोलराइज जैसे मेम्ब्रेन, न्यूरल मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल. माने रेस्टिंग पोटेंशियल सब किसमें आ गए, एक्शन पोटेंशियल में. और जैसे ही सोडियम आयन आ गया, तो सोडियम जो आया है ये थ्रू द सोडियम चैनल. अब सोडियम चैनल, अब यहाँ पर सोडियम जो चैनल है, यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ से, और यहाँ पर देखेंगे ये इसका सोडियम चैनल का जो आउटसाइड जो माउथ है, इट रिमेन एज क्लोज्ड. इट रिमेन क्लोज, बट साइटोसोलिक साइड, यह साइटोसोलिक साइड है, एक्स्ट्रा साइटोसोलिक साइड है. साइटोसोलिक साइड इट रिमेन ओपन. और यहाँ पर जो देखना, जो 3 डायग्राम यहाँ बनाए हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इट हैज टू कंटेन द नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, or that negatively charged amino acid, that is the aspartate and glutamate. However, glutamate does not involve in movement of the sodium. The glutamate also, that is the involved in the movement of the calcium. So the aspartate as a residue present in the active sites of this as a channel, sodium channel as a protein, which as a mouth remain as a closed toward the extracytosolic side. However, the intracytosolic side, its mouth remain open. As concentration of sodium increases and its cell get activated, then it allows coupling of the sodium ion. It attracts the negatively charged of the aspartate, that attracts more positively charged sodium ion. That sodium ion enters. अब एंटर तो हो गया. अब जैसे ही एंटर हो गया तो सेल को आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन करना है, तो then it catalyzes the outward movement of the potassium ion. Outward movement of the potassium ion to maintain the electrical balance, electrical charge. तो यहाँ पर अब क्या होगा, जो पोटासियम जो चैनल है, ये अगर मेम्ब्रेन को हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इनसाइड इसका माउथ क्लोज रहता है और आउटसाइड आपका खुला रहता है. इनसाइड नहीं है सो आपका potassium channel will just mouth remain closed toward the cytosolic side, intracytosolic side, where its mouth remains open toward the extracytosolic side. Again, has the amino acid present in their active site to carry the movement of the potassium. Again, with the negatively charged amino acids. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर सोडियम अंदर आ गया, तो then it brings positive charges. और जितना है पॉजिटिव चार्जेस का मतलब अगर हम देखें तो -70 मिली वोल्ट. जैसे कभी गुस्सा आ जाता आपको, कोई आपको बैठे हुए आप पीछे से कोई आपको टच कर रहा है, 1 बार 2 बार आप उसको छोड़ देंगे, मैंने रहने दो, 3 बार 4 बार, लेकिन 5-7 मिनट रिपीटेडली करता था, आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं. और हाइपर एक्टिव होने का सिंपली ऐसे यहाँ पर है कि यहाँ जो आपका -70 मिली वोल्ट है,
तो -70 मिली वोल्ट से अगर मान लिया कि आप -50 मिली वोल्ट पर आते हैं तो आप उसको बार्निंग करते हैं, और जैसे ही 50 मिली वोल्ट से सोडियम कंटिन्यू इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन और यह 0 मिली वोल्ट पर आ गया इक्विलिब्रियम और +30 मिली वोल्ट तक आ गया तो फायर हो जाता है। वहां पर कहता है कि नर्व जलने लगता है, जिसको कभी कहा जाता है गुस्सा 2 सेकंड के लिए आता है, 1 सेकंड के लिए आता है, और उसमें जो मिसहैपनिंग होती है वो बहुत बड़ा हो जाता है, चाहे वो ऐसे आवाज के रूप में, चाहे किसी पर ऐसे हार्मफुल हथियार से, किसी कंडीशंस में। यहाँ पर ये कहता है कि अगर ऐसे मेम्ब्रेन की डिपोलराइजेशन अगर आपका -70 से 30 मिली वोल्ट हो जाता है तो ऐसे न्यूरॉन ऐसे गेट फायर, एंड एट दैट ऐसे टाइम इफ ऐसे पीपल्स आर नॉट अंडर कंट्रोल तो देन ऐसे दे डू सम ऐसे नेगेटिव और अदर एक्टिविटीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो सोडियम जैसे ही आ गया तो पोटासियम को बाहर आ गया। अब पोटासियम अंदर बाहर चला गया। अब टेंडेंसी सेल की क्या है, तो सोडियम है अंदर से बाहर जाना है, पोटासियम को बाहर से अंदर आना है। तो ये जो नेक्स्ट प्रोसेस आपको जो बताएंगे ये आपका सोडियम पोटासियम एटीपी पंप के द्वारा होगा, जहां पर एटीपी खर्च होगा। इसमें देयर इज नो कंजप्शन ऑफ द एटीपी, so that is so sodium as a channel as a through which sodium enters from the extracellular environment to intracellular environment that catalyzes the depolarizations of this membrane and does not have so expenditure the ATP molecules. Simply as it has its process takes place due to the concentration gradient as that is present outside the cell, and sodium है और ऐसा आपका पोटासियम है। यही है आपका जब 1989 के डिकेड में जब है कार्डियो मतलब हार्ट, तब विलियम्स जैसे सबसे पहले उन्होंने जो हार्ट का स्टडी किए थे तो वहां पर एक ऐसे उन्होंने बताया था कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड जिसको डिजिटेलिस परपुरिया से निकाला गया डिजिटॉक्सिजेनिन। वह जो डिजिटॉक्सिजेनिन जो आपका क्या है कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड है, दैट हैज आल्सो विदाउट दिस कपल्ड मूवमेंट ऑफ द influx of the sodium, influx of the potassium, and that has यह जो सोडियम अंदर आता है वहां पर that has sodium goes out along whenever calcium has moves। वहां पर देखिए चेंजेस है सोडियम, ठीक है। तो जो डिजिटोनिन है जो आपका कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड है जिनको माने कि आपका जो हार्ट है सो ब्लड का फ्लो हार्ट में प्रॉपर नहीं हो रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं है, तो वहां पर दिया जाता है कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड्स, ठीक है। डिजिटेलिस डिजिटोनिन के नाम से है जो आपका डिजिटेलिस परपुरिया नाम के प्लांट से निकाला गया। सेम दूसरा जो आपका 1989 जैसे सुनते हैं कि दवा में कोई डॉक्टर है सो स्टेरॉइड लिख देते हैं, एनीवे तो जितने भी ऐसे निग्रोमाइसिन एंड अदर ऐसे जितने भी आपका जो स्टेरॉइड है सो आपका है तो वहां पर दे है सो कंटेन दे सो चार्ज है सो आयंस, आइदर सोडियम आयन और ऐसे पोटासियम आयन। This sodium ion potassium and because these steroid they are mostly hydrophobic, so that it has to contain the medicines, and that has medicine does not enter inside the cell due to their electrical charges. That's why it is made neutral by binding with the hydrophobic substances। तो then जो आपका जितने भी ये जैसे नोवा बायोसिन है आपका, चाहे आपका निग्रिसिन्स है, एक और है 2-3 है सो आपका जो आयनोफोर्स जिसको कहा गया था आयनोफोर्स, दिस कंटेन दिस आयनोफोर्स दैट आल्सो हेल्प्स द मैन सेल टू रिसीव एंड टू हैव सप्लाई हैव द मेडिसिन्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इंटरनल एनवायरनमेंट। तो हम भी ऐसा आपको इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को मेंटेन करना है। तो एक छोटा सा इसमें कैल्शियम सोडियम चैनल और पोटासियम चैनल एक है सो आपको बता दी सेकंड न्यूरॉन्स का। अगर आप यहाँ पर आप पंप बता देते हैं आपको, इसी से रिलेटेड आपका पंप, तब फिर आ जाएगा एनायन चैनल्स। अब यहाँ पर देखिए कि पंप, तब पंप में यहाँ पर ऑलवेज एटीपी खर्च होगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि आपको पानी है सो आपका अंडरग्राउंड वाटर से पंप करते हैं ऊपर ओवर टैंक में, ओवरहेड टैंक में, तो आपको मोटर चलाना पड़ता है, लेकिन आपको पानी जब लेना पड़ता है तो आपको कोई एनर्जी खातिर मोटर नहीं चलानी पड़ती है। तो सेम थिंग हैपेंस, जिसमें अभी आप देखिए कि सेल के अंदर सोडियम आया है, अब बाहर क्या चला गया, पोटासियम चला गया। अब इस सोडियम को बाहर आना है, पोटासियम को अंदर आना है, तो सो दैट आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सोडियम आयन इज कपल्ड also with the inward movement of the potassium ion that occurs also through a pump
दैट इज नोन एज सोडियम पोटासियम एटीपीएज पंप। अब यहां पर देखिए कि एटीपीएज है। अब ये जो एटीपीएज है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में बता दें कि दैट एटीपीएज इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, पी टाइप एटीपीएज, एफ टाइप एटीपीएज और थर्ड है वी टाइप एटीपीएज। पी टाइप और एफ टाइप और वी टाइप। पी टाइप, पी स्टैंड फॉर फॉस्फोरिलेशन। डॉक्टर साहब आपका टाइम हो गया है। सॉरी सर, ठीक है मैंने सर। टाइम हो गया आपका, फिर नेक्स्ट पे देते हैं ना। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ओके, थैंक यू। सर, ओके सर, ठीक। टुमारो कैन कंटिन्यू सर। हाँ, मैं अपडेट कर दूंगा। जो सेकंड है इनका नाम है, मैं आपको चेक करके अपडेट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।